Assalamu alaikum, my dear students. Hope by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala you are all quite well. Today we are going to discuss an important chapter of class 10th, that is quadratic equations. So dear students, first of all we will try to understand what is a quadratic equation. In your class 9 आपने पढ़ा होगा पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c. दिस इज योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x. अगर मैं इस पोलिनोमियल को इक्वेट जीरो के बराबर करूंगा, व्हेन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेटेड टू जीरो, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो के बराबर रखूंगा, लेट्स सपोज ax², एक मिनट, ax² हाँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो. This becomes my quadratic equation. So quadratic equation, it is nothing. A quadratic polynomial when equated to zero gives you a quadratic equation. उसके बाद let's see some definitions of quadratic equation. The first one is, in mathematics a quadratic equation is a polynomial equation of the second degree. Its general form is, let's see in this slide, its general form is ax². I will show its general form, that is ax² plus bx plus c equal to 0. This is the general form of quadratic equation, where x represents a variable or an unknown and a, b, c are constants. या ए बी सी और कॉन्स्टेंट्स विथ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ए हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अगर ए ज़ीरो होगा तो दिस विल नो लॉन्गर रिमेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ देखो, अगर ए आपका ज़ीरो होगा, लेट सपोज अगर ए आपका ज़ीरो होगा तो ये टर्म गॉन हो जाएगी, आपको फिर लीनियर इक्वेशन मिलेगी. दैट इज़ वाई दिस विल नो रिमेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द कॉन्स्टेंट्स ए बी एंड सी और रेस्पेक्टिवली द क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट इनको कहते हैं. बी को कहते हैं लीनियर कोएफिशिएंट एंड सी को कहते हैं कांस्टेंट टर्म और फ्री टर्म. इस सी को कहते हैं कांस्टेंट टर्म और फ्री टर्म. लेट्स मूव ऑन द अनदर स्लाइड. हाँ, नाउ क्वाड्रेटिक, आपको पता है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c. जब मैं इसको इक्वेट जीरो के बराबर रखूंगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. a इज नॉट इक्वल टू जीरो. हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन. यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दी है, आप देख सकते हो. हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन, 5x² माइनस 3x प्लस 3. इसको कौन क्वाड्रेटिक बनाता है? इसको ये जो 2 पावर है ना, दिस मेक्स इट क्वाड्रेटिक. ये इसको क्वाड्रेटिक बनाता है. द नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम कॉड. क्वाड्रेटिक का नाम कहाँ से आ गया? कॉड से. कॉड मीनिंग स्क्वायर, बिकॉज द वेरिएबल्स यहाँ पे गेट स्क्वायर्ड. यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो स्क्वायर्ड होते हैं, लाइक x². इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बिकॉज ऑफ द 2 ऑन द x. Or in simple words we can say a quadratic equation is an equation of the form ax² plus bx plus c equal to 0. Now question arises, why do we study quadratic equation? Why do we study quadratic equation? Is it very mandatory to learn quadratic equation? Yeah, it is quite well easy, because quadratic equation plays a vital role in day-to-day life. For example, you have a rectangular lawn in front of your house and you are asked to find the length and breadth of your lawn if the area of your lawn is 16 meter square. तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक का यूज करोगे. लेट द ब्रेडथ बी x, देन लेंथ इज इक्वल 2 टाइम्स x. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेडथ के बराबर होता है 2x इंटू x, इट इज x². बट आपके पास एरिया गिवन है, दैट इज 16. 2x² इज इक्वल 16. 2x² 16 को यहाँ ट्रांसपोज करो ऐसे, 2x² इज इक्वल टू 16. 2x² 16 को यहाँ ट्रांसपोज करो,
इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ योर लॉन. मोर ओवर द इलेक्ट्रिक वायर्स सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल्स, दीज आर माई टू पोल्स, ये ऐसे होती है, थोड़ा लूज टर्म में होती हैं. दीज फॉलो ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि हम आगे देखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है दैट इज पैराबोला शेप्ड, वो ऐसे होता है पैराबोला शेप्ड. उसके बाद द टायर्स ऑफ योर व्हीकल आर कर्व्ड, आपके जो गाड़ी के टायर्स हैं वो कर्व्ड होते हैं ऐसे. दिस इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, सो इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू लर्न quadratic equation. Moreover, it is an important topic of algebra. It comes into 2 to 3 marks in competitive examinations conducted by SSC. Now moving on the roots of quadratic equation. Roots of quadratic equation. A number alpha is called a root of ax square plus bx plus c equal to 0 why a is not equal to 0 in quadratic equation if अगर a alpha square plus b alpha square plus c equal to 0, मतलब x की जगह मैंने अब अल्फ़ा रखा, ऐसे a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. अगर ये अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो अल्फ़ा को कहेंगे ये इस इक्वेशन का रूट है. सेटिस्फाई करने का मतलब है LHS आपका बराबर आना चाहिए RHS, वही यहाँ पे लिखा है. देन अल्फा इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इफ अल्फा x इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन अल्फा इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. The roots of quadratic equation are called zeros of the polynomial. Roots को quadratic equation के जो roots है उनको कहते हैं हम zeros of the polynomial ax square plus bx plus c equal to 0. Let's see an example of a quadratic equation. Here is 1 2x square plus 5x plus 3 equal to 0. In this one a equal to b equal to 5 and c equal to 3. Second example is x square minus 3 equal to 0. This one is little more tricky where is a, in fact a is 1, क्योंकि जिसको कुछ कोएफिशिएंट नहीं होता है उसको हम a लगा सकते हैं. इसी तरह 5x minus 3, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर की जो टर्म है वो मिसिंग है, x स्क्वायर टर्म इज नॉट प्रेजेंट हियर. Okay, these were some examples of quadratic equations. Now hidden quadratic equations. So far we have seen the standard form of a quadratic equations ax square plus bx plus c equals 0, but sometimes a quadratic equation does not look like that. Here are some examples of different forms in disguise in standard form. पहली है एक्स स्क्वायर इज इक्वल 3x माइनस 1, नहीं लग रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इन टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे RHS में, तो एक बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. इसी तरह 2 टाइम्स w स्क्वायर माइनस 2w इक्वल टू 5, एक्सपेंड करेंगे ब्रैकेट्स को तो ये भी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. इसी तरह 2 टाइम्स z माइनस 1, इनको भी एक्सपेंड करेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. नाउ मूविंग ऑन the another topic, that is how to solve quadratic equation. हमारे पास 3 ways है to find the solution of the quadratic equation. One is by factorization method, another one is completing the square, third one is by using special quadratic formula. It was given by a great Indian mathematician. His name was Sardar Acharya, so it is also known as Sardar Acharya's formula. What is quadratic formula, dear students? It is nothing, it is x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. उसके बाद discriminant, the expression b square minus 4ac in the formula, it is called discriminant. It is called the discriminant because it can discriminate between the possible types of answers. It can be denoted by d. जब आपका discriminant पॉजिटिव होता है आपको 2 रियल सॉल्यूशंस मिलेंगे, जब आपका discriminant 0 होता है आपको 1 रियल सॉल्यूशन मिलेगा लेकिन बहुत आंसर सेम होंगे. व्हेन ये नेगेटिव होता है यू गेट 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस. वी विल डिस्कस ऑन 11th क्लास. तो आप इस टेबल को देख सकते हो. d ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाई 2a से दिए होते हैं. जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है नो रियल रूट्स. उसके बाद
using the quadratic formula we can use it in solving questions. Now I will last discuss the method of completing the squares. It is steps, and this method will become more clear to you when we solve the questions based on this. Completing the square is where we take a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 and turn into a into x plus d to the power 2 plus e equal to 0. We can use that idea to solve a quadratic equation. Find where it is equal to 0, but a general quadratic equation can have a coefficient of a in front of x square. जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका कोफिशिएंट होगा x स्क्वायर के सामने, बट दैट इज़ इजी टू डील विद, जस्ट डिवाइड द होल इक्वेशन बाय a. फिर हमें इस इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड करना है a से, देन कैरी ऑन, फिर हमें अपने स्टेप्स को फॉरवर्ड करने हैं. तो अब हम देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्वड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहला स्टेप है वी कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 5 स्टेप्स. नंबर 1, फर्स्ट स्टेप इज divide all terms by a, the coefficient of x square. Step number 2 is move the number term or constant term to the right hand side of the equation. जो constant term है उनको हम right hand side of equation से transfer करेंगे. तीसरा है complete the square on the left side of the equation and balance this by adding the same value to the right side of the equation. फिर हमें square complete करना है, एक नंबर ऐड करना है दोनों साइड से. वो मैं बताऊंगा वो क्या आपको ऐड करना है जब हम क्वेश्चन करेंगे. चौथा है टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. फिर हमें स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड से इक्वेशन में. पांचवा स्टेप है ऐड और सब्ट्रैक्ट द नंबर दैट रिमेन्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन टू फाइंड x. फिर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नंबर को करना है जो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन पे रहेगा. दीज स्टेप्स विल गेट मोर क्लियर टू यू व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चंस, दैट इज एक्सरसाइज या 4.3 of course. इसके बाद here is an example. Let's have a quick view on this example. You cannot get understand this example here, but while solving questions I will make you clear how to use method of completing the squares. This was all about introduction to quadratic equation. Inshallah in the upcoming lecture we will take exercise. Till then, take care, bye, stay blessed, stay home.